चला झूम झालाय ते वरचं बटन आहे ना ते लंब दिसून नाही राहिलं का? हा त्याला इकडे कर, आता इकडे कर, अजून थोडं सुरू केलं इकडे सरकू असं इकडे लंब दिसून नाही राहिलं का? त्याला इकडे कर, ते इकडे कर. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hello, friends. Sir, good afternoon. Good afternoon. Am I audible? Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. जूम पे आवाज नहीं आ रहा है मुझे. हेलो. Yes, sir. आपका आवाज आ रहा है? करके आ रहा है आपका आवाज सर. बात कीजिए. यस सर, आपका मुझे आवाज आवाज आ नहीं रहा आ है. रहा है आप लोगों का. हमें आ रहा है सर आपका आवाज. वी आर ऑडिबल. लेकिन आप लोगों का मुझे आवाज आना चाहिए ना. Yes, sir. Yes, I am audible, but I am not audible to you. Yes, please. Anyone say loudly. सर आपकी आवाज आ रही है अपर सर. हेलो सर, आवाज आ रही है आपकी. Hello, sir.
ठीक। सो आज हम देखने वाले हैं कैंसर। तो कैंसर पे आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन हम आज से कॉन्फ्लिक्ट, फिर से हमारा कॉन्फ्लिक्ट पे आ रहे हैं, हमारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर रहे हैं। तो आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए, कैंसर। कैंसर का क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, कैंसर कैसे होता है, इसमें क्या अप्रोच होना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कैंसर पैथोलॉजी जानने के पहले, कैंसर क्या है जानने के पहले, हम थोड़ा सा उसका बेसिक, थोड़ा सा बेसिक स्टडी करेंगे। तो बेसिक में बहुत ही शॉर्ट में कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट आपको बताऊंगा, जिससे थोड़ा सा रिवाइज हमारा स्टडी हो जाए। तो कैंसर, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे उसमें डीप जाएंगे। ये 2-4 लेक्चर हमारे कैंसर के ऊपर ही होने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कैंसर टॉपिक। तो कैंसर एक्चुअल में क्या है, कौन बताएगा? यस, व्हाट इज कैंसर? क्या होता है कैंसर? बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन of cells. So that's why we say it is a psychosis. And that psychosis, multiplication of cell is psychosis, and that psychosis goes out of control, become dangerous, destructive, degenerative, then it is syphilitic. So this disease is syphilitic because of out of control growth of cell, multiplication of cell, mutation of genes. Yes. So definition of cancer is आप लोगों को स्लाइड दिख रहे हैं? Yes. So cancer, it is a disease in which some of the body's cell grow uncontrollably and spread to other parts of the body. Yes. So growth, it is uncontrollable, and again it spreads other parts of the body, that is called mutation. It is a genetic disease where mutations in specific genes can cause a normal cell to become cancerous. Normal cell growth, it is 1:2, but when it becomes 1:4, 1:5, 1:6, then it is out of control. So mostly 2 types of genes are responsible for this. One is oncogene. It is a gene which controls the cell proliferation. Yes. So oncogene main function, it is control the cell proliferation, and oncogene is a gene that has the potential to cause cancer. Yes. So the main role of oncogene. In tumor cells, the genes are often mutated or expressed at high levels. Most normal cells will undergo a program form of rapid cell death when critical function are altered and malfunctioning. So this is called oncogene. It goes a program form of rapid cell death. Then the second gene, that is the tumor suppressor gene.
It is a gene which controls the cell division. Yes. So it controls the cell division. It has growth inhibitory activities. When the function of these cells become disturbed, then it causes the multiple cell generations, and that out of control cell generation cause the cancer. So tumor suppressor gene represent the opposite side of cell growth control, normally acting to inhibit cell proliferation and tumor development. In many tumors, these genes are lost or inactivated. Yes. So in many tumors, the genes are lost or inactivated, thereby removing negative regulators of cell proliferation and contributing to the abnormal proliferation of tumor cells. So abnormal growth, जो भी सेल का डिवीजन हो रहा है वो abnormal होगा. So these are the two basic function of oncogene and tumor suppressor gene. So when these two genes mutated, it causes cancer. Now, how it happens? When mutation occurs in the genes, when genes mutated, they do not perform their normal function. Because these mutated genes are abnormal genes, so they never perform their proper function, normal function. And normally, oncogene, when they get proper signal, it will tell the cell to grow and divide. So this growing of cell is abnormal and uncontrollable, and dividation of cell is also abnormal and uncontrollable. Yes, you can see here the gene replication cycle of mitosis 1:2, 3:4, like this. But this is normal, and when it goes out of control, when it becomes abnormal, it causes the disease like cancer. But when mutated, they do it without getting a proper signal, or they don't stop when there is a signal saying them to stop. Yes. All these oncogenes act as dominants. सर स्लाइड चेंज नहीं हो रही. If the cell has one normal gene, that is proto-oncogene. Proto-oncogene, that means जो इस प्रोसेस में जाने के पहले उस जीन को स्लाइड नहीं चेंज हो रही है. कहते हैं at a locus and one mutated gene, that is the oncogene. So mutation के पहले मतलब prepare for mutation, that is proto-oncogene. Proto-oncogenes are genes that normally help cells grow and divide to make new cells. सर स्लाइड चेंज नहीं हो रही. Help cells stay alive. When a proto-oncogene mutates or changes, or these are too many copies of it, it can become turned on, activated when it is not supposed to be, at which point it is now called an oncogene. Yes. So these are two genes, proto-oncogene and oncogene. The abnormal genes चेंज takes नहीं हुए. control. No signal oncogene, no single oncogene can by itself cause cancer. Yes, no single oncogene can by itself cause cancer. So it required multiple oncogenes. Single oncogene से कैंसर डिटेक्ट नहीं होगा. कैंसर के लिए
हमें बहुत सारे oncogenes चाहिए, and that oncogenes is abnormal genes by increasing the rate of mitosis of the cell in which it finds itself. इसीलिए ये प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होती। तो आपने कट भी किया, जो भी कैंसरस पार्ट है कट भी किया, तो वापस उसकी रीग्रोथ बहुत फास्ट होती है। सो दिस इज साइकोसिस, जो बिनाइन है, benign cancerous growth is psychosis, and when it becomes out of control, malignant, then it is syphilitic. Yes, yes, Dr. यादव जी ने हैंड राइज किया था शायद। जय श्री। सर आप स्लाइड चेंज नहीं हो रही। ओके, स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है। यस, आप लोगों की आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही, आई डोंट नो। बट मेरी आवाज आ रही है, यस और नो, चैट बॉक्स में डालिए। ओके, अभी स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? यस डालिए चैट बॉक्स में। अभी स्लाइड्स चेंज हो रहे हैं आपके स्क्रीन पे, देखिए। यस, चैट बॉक्स में डालिए यस और नो। यस, yes, this is first slide, second, third, fourth, fifth, and this is sixth. Okay, seventh slide. तो साइकोसिस तक हम पहुंच गए। साइकोसिस जो नॉर्मल सेल जनरेशन होता है, that is normal, natural, but when it become disturbed, the process of mitosis become disturbed, then it is psychosis. And when this psychosis goes out of control, that means the dividation and proliferation of genes or cells goes out of control, then it is syphilitic. That is also called as the gene mutation, out of control growth, or the metastasis. Yes. Then dividing cells are at increased risk of acquiring mutations. So a clone of actively dividing cells can yield subclones of the cells with a second, third. Yes. So dividing cells are at increased risk. जो डिवाइडेशन सेल का हो रहा है, वन हैज टू बी एट इंक्रीजिंग रिस्क। मतलब ये कंट्रोल में ही होना चाहिए, लेकिन व्हेन इट क्रॉसेस द बाउंड्री, देन रिस्क कैंसर होने की बढ़ जाती है। दैट इज एक्वायरिंग म्यूटेशन, म्यूटेशन होने के बहुत चांसेस है। सो अ क्लोन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स कैन यील्ड सब क्लोन्स। एक सेल एबनॉर्मल तैयार हुआ तो उससे जो सेल्स वापस तैयार हो गए, दैट सेल आल्सो गोज इनटू माइटोसिस, एंड दैट माइटोसिस 1:2 सेल्स आल्सो बिकम एबनॉर्मल। सो इसके मतलब एक सेल का दूसरा सेल जब डिवाइड होके बनेंगे, कि तो बनेंगे, दैट इज द क्लोन्स, दैट आल्सो द एबनॉर्मल। सो विद द सेकंड, इस तरह से प्रोसेस बढ़ती जाती है, नॉर्मल सेल्स बढ़ते जाते हैं, देन it is become a cancer. So when a clone loses all control over its
mitosis, it is well on its way to developing into a cancer. Yes, so when it loses its control of mitosis, of dividation of the cells, then it becomes cancer. This is syphilis. Yes. जब तक कंट्रोल में है, that is the normal natural growth 1:2, but when it disturb become 1:2, 1:5, then it is syphilitic. Cancer is classified into skin cancer, lung cancer, breast cancer, etc. So, however, as homeopaths, this will not be of much importance to us, as it will not help us in individualizing the patient. Yes. So it is most important thing for us. However, as homeopaths, this will not be of much important to us, as it will not help us in individualizing the patient. We need to know the histological classification, which will help us to understand the disease process. The pace of disease, the reports presented to us by the patient. Yes. तो ये नेचुरल है, मतलब हर होम्योपैथ के साथ ऐसा ही होता है. तो हमें हमारे पास जब भी पेशेंट आता है कैंसर का, तो वो पूरी फाइल नहीं लेके आएगा, ईच एंड एवरी इन्वेस्टिगेशन वो करके आता है, सब रिपोर्ट्स वो लेके आता है, तो हमारे पास ऑलरेडी वो सब डाटा मिल जाता है. Yes, so we need to know the histological classification, which will help us to understand the disease process. But हमारा important part होता है cancerous patient में history taking. तो before the growth become abnormal, उसके पहले हमें वो जानकारी चाहिए कि इसके पहले ये जो नॉर्मल ग्रोथ चल रही थी वो एबनॉर्मल क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये जीन म्यूटेशन हुआ. तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे हिस्ट्री टेकिंग का, और डिपेंड करता है कैंसर कौन से पार्ट का है. तो उस पार्ट से रिलेटेड क्या इमोशंस थे, क्या अटैचमेंट थी, देन क्या reaction थी, and related conflict to that organ. Yes. So all the cancers are grouped into 6 major categories. There are 6 major categories of cancer. It is by International Classification of Disease for Oncology. So these 6 main categories are sarcoma, carcinoma, myeloma, leukemia, lymphoma, and mixed cancer. Yes. So carcinoma, what is carcinoma, what is sarcoma, what is myeloma, then leukemia, lymphoma, and mixed cancer. So which are the mixed cancers? So we will see one by one. Carcinoma. So carcinoma is a cancer that forms in epithelial tissue. So which cells, which tissues are involved in carcinoma are epithelial tissue. So epithelial tissues lines most of your organs. The internal passage ways in your body, like your esophagus and your skin. So most cancers affecting your skin, breast, kidneys, liver, lungs, pancreas, prostate gland, head and neck are carcinoma. So carcinoma
कहाँ कहाँ होता है, तो इतने सारे ऑर्गन्स है जिसमें कार्सिनोमा होता है, और कार्सिनोमा होने की वजह है बिकॉज ऑफ इपिथेलियल सेल्स। सो इपिथेलियल टिश्यूज में जो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, दैट इज द आउट ऑफ कंट्रोल जो ग्रोथ होगी इन द इपिथेलियल सेल, दैट growth is called as carcinoma. So carcinomas occur when the DNA of a cell is damaged or altered and the cell begins to grow uncontrollably and become malignant. Yes, so this is the carcinoma. So you can see here basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, melanoma, and Merkel cell carcinoma. So most of the common carcinoma is squamous cell carcinoma. Yes. Then sarcoma. So sarcoma. What is sarcoma? Sarcoma is a type of cancer that can occur in various locations in your body. Sarcoma is a general term of a broad group of cancers that begins in the bones and in the soft, also called connective tissue, soft tissue sarcoma. Sarcomas can develop from mutation in DNA that affect the genes that regulate cell growth. So these mutations may be passed down from parents or acquired during an individual's lifetime. So this is sarcoma. So sarcoma of soft tissue and bone tissue. Yes. Cells of bones and soft tissue causes sarcoma. Then myeloma. Myeloma, also called multiple myeloma, is a cancer of plasma cells. तो हमें यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं, ये देखने का और ये पढ़ाने का मोटो यही है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा कैंसर ट्रीट कर रहे हैं और उस कैंसर्स में कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर उस सेल से रिलेटेड हमें अकॉर्डिंग टू द 7 लेयर्स ऑफ सप्रेशन चार्ट हमें कौन से लेयर में वो आएगा, कौन से सेल्स उसमें इन्वॉल्व है, फिर उसका किस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम उसे देख सकते हैं, और उसका जब हीलिंग होगा तो किस टाइप से होगा, कैसा होगा, इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि विच टाइप ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व, फिर उस पे डिपेंड होता है कॉन्फ्लिक्ट. यस, सो इन माइलोमा द सेल्स ग्रो टू मच, क्राउडिंग आउट normal cells in the bone marrow that make red blood cells, platelets, and other white blood cells. Yes, so in myeloma, these are the cells involved. A group of plasma cells become cancerous and multiplies. The disease can damage of the bones, immune system, kidneys, red blood cells or red blood count. So this is called myeloma. Myeloma में हमें ये सब कौन से सेल्स इन्वॉल्व हो रहे, क्या क्या ब्लड के डेरिवेटिव्स वहां पे है, ये हमें ध्यान में रखना है ताकि हम इजीली माइलोमा में कॉन्फ्लिक्ट निकाल सकें. देन ल्यूकेमिया. अब माइलोमा और ल्यूकेमिया में क्या डिफरेंस होता है? ल्यूकेमिया इज कैंसर ऑफ बॉडीज ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू. तो माइलोमा में प्लाज्मा सेल्स और ल्यूकेमिया में बॉडी ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज. सो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज में कौन से टिश्यूज आते हैं? इंक्लूडिंग द बोन मैरो. So most important thing in leukemia, that is the
bone marrow affections, and the lymphatic system. Many types exist, such as acute lymphoblastic leukemia, acute myeloid leukemia, and chronic lymphocytic leukemia. So many patients with slow growing types of leukemia don't have symptoms. Slow growing type of leukemia don't have symptom. Rapidly growing types of leukemia, some forms of leukemia are more common in children. Other forms of leukemia occur mostly in adults. So rapidly growing leukemia mostly occur in adults. Yes. So leukemia में bone marrow and lymphatic system is involved. Then lymphoma. So lymphoma is a cancer of lymphatic system, which is part of body's germ fighting network. Germ fighting network. The lymphatic system includes the lymph nodes, that is lymph glands, spleen, thymus gland, and bone marrow. तो लिम्फोमा में ये सब बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं. सो मेन टाइप ऑफ लिम्फोमा आर Hodgkin's lymphoma and non-Hodgkin's lymphoma. Yes, so you can see here the figures, the diagram of Hodgkin's lymphoma, cutaneous T-cell lymphoma, lymphoblastic, non-Hodgkin's lymphoma. Yes. And the last, that is the mixed type of cancer, neoplasm with more than one cell type, neoplasm, but arising from only one germ layer, are called mixed tumor. तो मिक्स कैंसर्स होते हैं. तो मिक्स कैंसर्स में एक्चुअली होता है मिक्सिंग ऑफ टिश्यूज. टू टाइप्स टिश्यू के जो मतलब वन टाइप ऑफ टिश्यू का कैंसर और अनदर टाइप ऑफ टिश्यू का कैंसर, ये मिल के जब ग्रोथ होती है, दैट इज द मिक्स ट्यूमर. तो मिक्स ट्यूमर में कौन से टाइप के टिश्यूज है ये फाइंड आउट करना होता है और उससे रिलेटेड conflict. So the best example is benign mixed tumor. Best example is benign mixed tumor, also called as pleomorphic adenoma of salivary gland. So neoplasm with more than one cell type and arising from more than one germ layer are called teratomas. Yes, teratoma also having the mixed type of cells. So some of the example including mixed mesodermal tumor. Mesodermal tumor में भी 2-3 टाइप के सेल्स होते हैं, that is carcinosarcoma, adenosquamous carcinoma, and teratocarcinoma. These are the types of mixed carcinoma, mixed cancers. So blastoma are another type that involves embryonic tissues. So mixed type of cancers में हमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें more than 2 types of cells होते हैं, इसीलिए इसे mixed type of cancer कहते हैं. So this is the classification of cancers. Yes. So yes, तो इस पे इसमें आप लोगों को क्या अच्छा लगा आप बताइए. समझ में आया नहीं आया? कोई स्लाइड रिपीट करना है तो मैं कर सकता हूँ. यस, बोलिए. या फिर सर फर्स्ट और सेकंड स्लाइड डॉक्टर सचिन. हाँ
अनम्यूट हो नहीं रहे क्या आप? हेलो। हाँ। जी सर, गुड इवनिंग सर। आपका आवाज नहीं आ रहा है सचिन, आप गुड इवनिंग अनम्यूट है सर। लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। कोई बता सकता है कि ये क्या हो रहा है? आप लोगों का साउंड मुझे क्यों नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा सर। हेलो। यस, शायद सेटिंग में कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें अभी सब इंस्टॉल किया है, सब नया डाला है इसमें लैपटॉप में, क्योंकि पूरे हार्ड डिस्क बैठ गई थी तो नई हार्ड डिस्क डाला है। उसकी वजह से शायद सेटिंग में कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमने इसके पहले हम कैंसर पे इतने ही आज लेंगे, उसके बाद कल मैं और डिटेल में थोड़ा सा जाऊंगा। आज हम खाली कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं कैंसर के, कितने टाइप्स है और कौन से जीन उसमें अफेक्ट होते हैं, म्यूटेट होते हैं, वो हमने देखा है। कैंसर क्या है, देन उसके टाइप्स क्या है, किस टाइप से ग्रोथ होती है, किस टाइप से म्यूटेशन होता है, ये आज हमने देखा। कल हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, फिर उसके बाद हम कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे। ओके, सो जैसे कि हमने अभी दो, शायद नियर अबाउट 2 मंथ्स हमने डिल्यूजन के रूब्रिक्स पढ़े। तो मैं आप लोगों को आज एक रूब्रिक बताता हूं। ये रूब्रिक कब लेना है और इस रूब्रिक का माइज्म क्या है, आप लोगों को मुझे बताना है। रूब्रिक है लीनिंग अगेंस्ट एनीथिंग, लीनिंग अगेंस्ट एनीथिंग, एमुलरेशन, हार्ड। यस, तो ये रूब्रिक का क्या मीनिंग है, चैट बॉक्स में आप फटाफट टाइप करके डालिए। लीनिंग अगेंस्ट एनीथिंग, एमुलरेशन, हार्ड। यस, और ये रूब्रिक कब लेना है, किस सिचुएशन में लेना है, और इस रूब्रिक का माइज्म क्या है। बहुत अच्छा रूब्रिक है। यस, आप लोग चैट बॉक्स में डालिए अगर आप लोगों को ये रूब्रिक समझ में आया है तो। आज हमें चैट बॉक्स हेलो की सर, हेल्प आवाज आ रही लेके है? ही बात करनी पड़ेगी, इसलिए आप आवाज चैट बॉक्स में टाइप करके डालिए। अगर ये रूब्रिक समझ में नहीं आया होगा तो आप नो डालिए, और समझ में आया होगा तो एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तो चैट बॉक्स में एक भी मैसेज नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा आपको इस पेज मतलब ये रूब्रिक कब लेना है थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ, थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। तो मेरा एक पेशेंट जिसे मैंने मेडिसिन दिया, 2 महीने तक वो मेडिसिन से टेम्पररी बेटर बाय सिटिंग विथ सपोर्ट, सोरा मायजा, नो, मनीषा काटे। तो उस पेशेंट को उस मेडिसिन से नियर अबाउट 2 मंथ्स स्लाइड 25% रिलीफ था, लेकिन उसके आगे
वो बढ़ नहीं रहा था, क्योर बढ़ नहीं रहा था। और फिर मतलब थोड़ा बहुत उसे रिलीफ हुआ, जैसे कि पेशेंट को नेक पेन था, शोल्डर स्टिफनेस था, राइट शोल्डर स्टिफनेस, देन राइट साइड चेस्ट पेन था, उसके बाद बैक पेन था एंड बैक ऑफ चेस्ट पेन था, देन नमनेस इन एक्सट्रीमिटीज, स्पेशली अपर एक्सट्रीमिटी। तो फर्स्ट उस पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ हुआ शोल्डर स्टिफनेस में, देन सर्वाइकल पेन उसका नियर अबाउट 25% कम हुआ, नेक पेन कम होके उसको थोड़ा चेस्ट पेन बढ़ गया था, इसलिए मैंने वेट किया 2 मंथ्स तक कि ये अबो डाउनवर्ड हो रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, कुछ दिन बाद अगर वो और नीचे जाता है, लोअर हो जाता है तो इट्स बेटर। लेकिन उस पेशेंट को रिलीफ नहीं हुआ और आज वो पेशेंट ने ये सिम्टम मुझे दिया कि मैंने, पेशेंट खुद बोल रहा है कि मैंने मेरे ऊपर बहुत स्टडी किया, मुझे कौन सी चीजों से तकलीफ होती है और कौन से चीजों से मुझे अच्छा लगता है। तो पेशेंट 75 इयर्स ओल्ड लेडी है और उस लेडी ने खुद के ऊपर इतना अच्छा स्टडी किया। वो बोले कि मैं अगर सोफा पे बैठती हूँ तो मेरा दर्द बढ़ जाता है, पेन बहुत बढ़ जाता है, बेड पे बैठती हूँ तो मेरा दर्द बढ़ जाता है, इवन जब मैं पूजा के लिए मंदिर में बैठती हूँ, मंदिर के सामने बैठती हूँ पूजा करने के लिए, तो मुझे, मैं सिंपल अपना जो आसन होता है थोड़ा सॉफ्ट वो लेके अगर बैठती है तो मेरा दर्द बढ़ जाता है, बैक एक बढ़ जाता है, शोल्डर पेन बढ़ जाता है, नेक पेन बढ़ जाता है। दैट मीन्स मैं किसी भी सॉफ्ट चीज पे अगर बैठती हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन वही मैंने अगर कुछ हार्ड लेके बैठ गई मतलब आसन के बजाय मगर अगर मैं कुछ हार्ड चीज लेके अगर बैठती हूँ तो मुझे कम दर्द होता है। मैं सोफे के बजाय अगर नीचे जमीन पे बैठती हूँ तो मुझे कम दर्द होता है। मैं बेड पे विदाउट गद्दी, विदाउट बेड अगर मैं बैठती हूँ या फिर सोती हूँ तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर सिंपल मैंने चादर भी डाली बेड पे तो मुझे दर्द शुरू होता है। सो ये पेशेंट ने खुद के ऊपर स्टडी किया कि मुझे ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन। सिंपल जो चादर हम ओढ़ते हैं आंख पे, वो चादर पे भी अगर वो सोई तो उसे दर्द होता है। दैट मीन्स किसी भी सॉफ्ट चीज से उसे एग्रीवेशन है। अब यहाँ पे हमें एग्रीवेशन बाय सॉफ्ट थिंग्स लेना चाहिए या फिर एमुलरेशन बाय हार्ड थिंग्स लेना चाहिए। एग्रीवेशन लेना चाहिए। यस, वन मैसेज बेटर बाय सिटिंग वही। यस, बोलिए, अगर किसी को कुछ बोलना है इस पे तो बोल सकते हैं, टाइप कीजिए। आवाज का प्रॉब्लम भी मैं आज सॉल्व कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। तो एक्चुअली she feels better by hard pressure or sitting or lying on hard things। ये बहुत ही अच्छा रूब्रिक है। She was chilly, right-sided, very irritable, very restless। वो खुद प्रयोग करती रहती कि ऐसा करूंगी तो अच्छा लगेगा क्या, वैसा करूंगी तो अच्छा लगेगा। क्लिनिक में आते बराबर, क्या डॉक्टर साहब मुझे रिलीफ ही नहीं हो रहा है। सो इरिटेबिलिटी उसके चेहरे पे दिखती है, इतनी इरिटेबल, ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक दिस। सो all things
are matched with Rustox, and Rustox is the remedy covering this rubric, leaning, Leaning, leaning things, मतलब leaning against anything, amelioration, hard. तो कोई भी हार्ड चीज का जब वो सपोर्ट लेती है, हार्ड चीज पे जब लेटती है, हार्ड चीज पे जब टेक के बैठती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। हार्ड चीज पे जब बैठती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली दिस रूब्रिक इज साइकोटिक रूब्रिक, बट अगर किसी पेशेंट में कुछ मिल नहीं रहा है तो इस टाइप के पर्टिकुलर रूब्रिक भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रेयर क्वेयर रूब्रिक है जो हर पेशेंट नहीं बताता है। और अगर ऐसा स्ट्राइकिंग किसी पेशेंट में हमें मिलता है, जब हम हिस्ट्री लेते हैं या फिर हमने पहले कोई मेडिसिन दी है और उस मेडिसिन से इतना रिलीफ नहीं हो रहा है, पेशेंट को 100% क्योर नहीं हो रहा है, पेशेंट इज नॉट गोइंग ऑन प्रॉपर क्यूरिंग प्रोसेस, देन यू कैन थिंक, थोड़ा सा आपको हट के सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स जाके आपको देखना पड़ेगा कि पेशेंट में कुछ नया मिलता है क्या, कुछ स्ट्राइकिंग, कुछ रेयर, कुछ पिक्यूलियर मिलता है क्या। यस, सो आज मैंने ये पेशेंट के हिस्ट्री लेने का ट्राई किया कि भाई इस पेशेंट को 25 के ऊपर रिलीफ नहीं हो रहा, तो हमें थोड़ा रिटेक करना पड़ेगा। तो जब मैंने पेशेंट को थोड़ा सा हिस्ट्री पूछना शुरू किया, तब उसने बताया कि मैंने बोले थोड़ा सा मेरे ऊपर 2-4 बातें मार्क की और वो एक्सपीरियंस भी की, एक प्रकार का आप उसे एक्सपेरिमेंट समझ लो। बोले मैंने वो करके देखा तो मुझे उसमें कुछ चीजें दिखी और उसने वो चीजें बताई, तब मुझे लगा कि यस दिस इज स्ट्राइकिंग, ये हो गया आउट ऑफ बॉक्स। तो ऐसे चीजें जब हमें कुछ हिस्ट्री में कुछ स्ट्रांग नहीं मिलता है, कुछ ऐसे पाइवोटल नहीं मिलता है, तो ऐसे रूब्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी चाहिए। और लेकिन ऐसे रूब्रिक लेने के बाद जो भी रेमेडीज उसमें होती है, वो रेमेडीज उस पेशेंट के फिजिकल जनरल्स भी कवर करनी चाहिए। यस, उसकी पहली रेमेडी थी एसिड फॉस, तो एसिड फॉस से उसे 25% ही रिलीफ हुआ, लेकिन Rustox covering all the things, his mental makeup, his physical makeup and general makeup, even his side. Yes, so I prescribe her Rustox 200. Yes, so बहुत ही अच्छा रूब्रिक है। ओके, यस, तो अभी अगर आप लोगों को कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डालिए, अगर नहीं है तो नो डालिए, अगर है तो यस डालिए। ठीक, यस, थैंक यू जय श्री। यस, साइकोटिक रूब्रिक। Okay, so should I complete here? Yes. तो आज हम यही रुकेंगे, कल हम कैंसर का आगे का पार्ट देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। बहुत दिन हमारे बीच में वेस्ट हुए बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन माय लैपटॉप हार्ड डिस्क, बिकॉज एमुलरेशन, दिस एक क्वेश्चन आया है कि व्हाई दिस रूब्रिक इज साइकोटिक। दिस रूब्रिक इज साइकोटिक बिकॉज
It gives the relief, amelioration. So all ameliorations are psychotic, all aggravations are syphilitic. All aversions are syphilitic, all desires are psychotic. Yes. Okay. Yes. So yes. तो आज हम यही रुकते हैं. Okay. Bye bye. See you. Thank you very much. Thank you, sir. Yes. कल फिर मिलेंगे Very good. Yes, sir. at 4 p.m. Thank you, sir. Thank you, sir.